नमस्कार आपण मानक समस्त को यह वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में देखा +3 4 सेमिस्टर इकोनॉमिक्स जीरो पेपर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स आम देखा केनिशियन अप्रोच केनिशियन जहाँकि इंपोर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आसे एग्जाम रे। तो आम यही वीडियो देखा द केनिशियन अप्रोच बेसिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ कंजम्पशन सप्लाई एंड कंजम्पशन देखा। तो फास्ट टाइम देखा द केनिशियन अप्रोच फाउंडेड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन माइनार्ड केनिस। तो केनिशियन अप्रोच टी कौन कला ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जे कि जॉन माइनार्ड केनिस से कौन फाउंड करते फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टिकुलर इन द शॉर्ट रन। तो से कहले जे कौन ना जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आप पूर्व देखी एग्रीगेट डिमांड कौन एग्रीगेट सप्लाई कौन सब देखी तो जो देखना देखी देख दिखाँ थोड़े टिके आप देखी बेसिक क्लीयर हो तो यह अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो। तो से कहले कौन ना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई किपर गोटे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करछि कोते ना आउटपुट क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में पार्टिकुलरली गोटे कौन शॉर्ट रन रे दिस अप्रोच माने कौन Keynesian's approach emerged in response to the Great Depression when classical economic theories seemed inadequate and explaining prolonged unemployment and economic stagnation. Okay, here are some basic of Keynesian approach regarding aggregate demand and aggregate supply and consumption हम देखिबा किछि तार। तो फर्स्ट टाइम देखिया कोन एग्रीगेट डिमांड कोन एग्रीगेट डिमांड बा एडी एग्रीगेट डिमांड कौन ना एग्रीगेट डिमांड बा एडी रिप्रेजेंट द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑज एन इकोनॉमी एट ए गिवन लेवल एंड ओवर ए स्पेसिफिक टाइम इट इंक्लूड सेवरल की कंपोनेंट्स। तो सेवरल की कंपोनेंट गुडी कौन कौन ना फास्ट होची कंजम्पशन कंजम्पशन आसीबो दिस इज द टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक डिस्पोजेबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंटरेस्ट रेट्स एंड इफेक्ट। ओके, तो कंजम्पशन थाए कंजम्पशन माने कोन ना द टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज गोटे हाउस होल्ड गुड्स सर्विस के स्पेंड कले। ओके, कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक डिस्पोजेबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंटरेस्ट रेट्स एंड इफेक्ट्स। नेक्स्ट टाइम देखिए इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कौन ना दिस रिप्रेजेंट्स स्पेंडिंग बाय बिजनेसेस ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी एंड बिल्डिंग सब थाए एंड बाय हाउस होल्ड ऑन न्यू होम्स इन्वेस्टमेंट सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स एंड बिजनेसेस एक्सपेक्टेशंस जो हम इन्वेस्ट करती। नेक्स्ट हूँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकार मध्य किसी स्पेंड करती जेपरिक दिस इनक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन डायरेक्टली इंपैक्ट एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट हूँ नेट एक्सपोर्ट एनएक्स। नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्षेत्र में कौन हम ना this is the difference between exports and imports. Exports add to aggregate demand while import reduce it. तो export कौन करना aggregate demand को कौन सी add करे किंतु import कौन करे ताको reduce कर दिए। नेक्स्ट टाइम देखिए एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई बाय एस कौन ना एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy at a given price level. It can be viewed from two perspectives for शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन कौन ना इन द शॉर्ट रन प्राइसेस एंड वेक्स मे बी sticky meaning they did not adjust immediately to changes in demand or supply. This can lead to periods of disequilibrium where demand may exceed or fall short of supply. आउ एथरे हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कौन देखिए ना लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बा LRSA is the long run prices and wages tend to adjust and the economy moves towards full employment or potential output, typically represent as a vertical line indicating a fixed level of output at full employment. नेक्स्ट देखिए केनिशियन अप्रोच रो कंजम्पशन कौन। तो कंजम्पशन हम देखिबा केनिशियन कंजम्पशन थ्योरी एक्सप्लोर्स हाउ कंज्यूमर्स स्पेंडिंग और कंजम्पशन डेराइव्स इकोनॉमिक एक्टिविटी माने केते स्पेंड कले इकोनॉमिक एक्टिविटी तांगर कोन particularly through its impact on aggregate demand. It was introduced by John Maynard Keynes, a British economist, in his seminal work The General Theory of Employment. से देखा कहते जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936।
इट डेभलप बाय जॉन मैनर्ड केनेसिस इन 1930s तो डेभलप है धीरे धीरे कौन 1936 लिखिए परीक्षा पचारे की कंपोनेंट ऑफ केनेसियन इकोनॉमिक्स focus the role of consumption is driving economic activity and growth. The Keynesian consumption function is a concept is in economics that tracks the proportion of income used to buy goods and services. It can be used to predict future spending. The Keynesian consumption function is based on the in the psychological law of consumption. This law states that people tend to spend more on consumption when their income increases, but not the same extent. This is in because some of the income is also saved. तो कौन कहले द केनेसियन कंजम्पशन जो फंक्शन रहा बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बेस्ड रही दिस लॉ जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन स्टेट दैट पीपुल टेन टू स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन जो लोक मैंने जो कंजम्पशन स्पेंड करेंगे व्वेन देयर इनकम इनक्रीज आम जाना कथा इनकम इनक्रीज आम अधिक स्पेंड करवा बट नॉट द सेम एक्सटेंट दिस इज बिकज सम ऑफ द इनकम इज ऑल्सो सेव्ड कहीं न थाए कहीं आम किसी इनकम को आम सेव कर दिखती इनकम इनक्रीज हेल्ले किसी आम सेव कर दिखती The Keynesian consumption function can be expressed as C is equal to A plus B by D. So in this equation, C is the consumption expenditure, A and B are constant, YD is real disposal income. Disposal income जानते जे सब जो टैक्स फैक्स कटला पर आप प्रोग्राम देखी वीडियो रे प्लेलिस्ट आप चेक कर दिखाते आप सब पाइजे डिस्पोजल इनकम कौन जीडीपी कौन सर्कुलर फ्लो इनकम कौन ओके थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम केनेसियन अप्रोच डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आम देखा थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो